Hi everyone, so today we will be starting with nuclear transfer experiments. So this is a long video, so like and subscribe. So first we will be starting with our definition, which is transplantation. So what is transplantation? It is a process in which a small part of blastula, gastrula or even an embryo is cut and inserted in suitably prepared wound of the same or the other embryo. So again we can repeat the definition that transplantation is a process in which small part of blastula, gastrula, even an embryo is cut and inserted in suitably prepared wound of the same or other embryo. So for now we will be studying about the definition of donor and host. The transplanted tissue grows in the new site. Embryo from which tissue is removed is called donor and the embryo which receives the tissue is called host. Now transplanted tissue is called graft. There are of transplantation. First is autoplastic, homoplastic, heteroplastic and xenoplastic. In vertebrates, only autoplastic and homoplastic transplantation is successful. This homoplastic and autoplastic in vertebrates. So autoplastic is when a piece of same embryo is transplanted to another place. Homoplastic when transplantation is from individual to another of the same species. Okay. Heteroplastic is transplantation is from individual to another species of the same genus. Xenoplastic when transplantation is to an individual more distantly related than species of one genus. This is the definition. Now, what is nuclear transplantation and how it is started? So, during the process of development, nucleus performs varied tasks from time of cleavage of the egg to the organogenesis. So, how we will start our answer? We will write during the process of development, nucleus performs varied tasks from time of cleavage of the egg to the organogeny. So does it mean that nucleus of the blastula cell possesses properties different from the nucleus of gastrula cell, or that differentiated cell of the intestinal wall? So Weizmann has proposed that diversification among the cells during development arises through differential and quantitative divisions of nuclei during cleavage. His conclusion was based on observation that during early development in Ascaris, the nuclei of prospective somatic cells undergo chromosomal diminution. Diminution is also called reduction, whereas those of prospective reproductive cells do not. But the cytological observation soon established that during cleavage, nuclei of all daughter cells descending from zygote are equivalent in every way. Reich demonstrated the equivalence of nuclei in sea urchin. So if we have a long answer, we can extend our answer by writing these points. Now let's begin with the nuclear transplantation experiments in amphibians. So Briggs and Kings in 1953, they transplanted the nuclei of embryonic cells of frog Rana pipens, and the first experiment included transplantation of blastula cell nuclei into enucleated cell. It involved three steps. So first step is the enucleation of recipient egg. Enucleation means deletion of the nucleus. So fully ripe eggs of frog are pricked with fine glass needle to activate them. The nucleus now moves toward the surface in preparation of second maturation division, and at this time with the help of sterile glass needle, the nucleus is slowly removed.
The egg may also be enucleated with the ultraviolet rays which kill the nucleus. The egg must be kept in new and Twitty solution. This is the capillary pipette. This is a metaphase figure. This is the cell and pipette will be inserted in this glass needle. This is a spermatozoon, female chromosome inexecuted. This is a glass needle. This is the sperm head. So this diagram we are going to draw. Diagram is the enucleation of frog egg with capillary pipette or glass needle. This diagram represents the enucleation of frog egg with capillary pipette. Now removal of donor nucleus. Now let's come to the removal. First we did the enucleation. Now we will do the removal of donor nucleus. The egg membrane is slowly removed from blastula with the help of fine glass needle, center of the animal hemisphere. The center of the animal hemisphere is prodded to remove the subsurface cell. This is placed over the intact surface of adjoining cells. The sterile micropipette is selected. Now the sterile micropipette is selected which has a slightly smaller diameter than the cell. When the cell is sucked with the help of micropipette, the cell membrane breaks and nucleus along with a very small portion of cytoplasm enters the pipette. The whole process requires careful manipulation, and care must be taken not to damage the nucleus. This is the removal of donor nucleus. How we will remove the nucleus and how we will be putting that nucleus in the recipient egg. Now the transplantation of donor nucleus. The donor nucleus that has been sucked from blastula cell is slowly introduced in enucleated egg. जो डोनर न्यूक्लियस हमने लिया था वो सक्ट हो गया कैपिलरी पिपेट से, ठीक है, फ्रॉम ब्लास्टुला सेल एंड इज स्लोली इंट्रोड्यूस्ड इन enucleated egg. Or at the time of introduction, nucleus must be near at the tip of the micropipette but not at the tip. Near the tip होना चाहिए और उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. So once the nucleus has entered the enucleated egg, जैसे ही nucleus enter कर जाएगा enucleated egg में, the pipette is slowly withdrawn. When the pipette comes out, it draws the surface coat of the egg against the vitelline membrane and small quantity of egg cytoplasm flows out as exudates. ये हो गया. इसके बाद ये हमारा डायग्राम बनेगा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनर न्यूक्लियस फ्रॉम ब्लास्टुला टू enucleated egg and its development into tadpole. This is the donor nucleus. ये इसका सोल्यूशन और ये ट्रांसप्लांटेशन कैसे हुई और ये टैडपोल में कैसे बना. फिर आएंगे इफेक्ट्स. इफेक्ट्स क्या होंगे इसके. So Briggs and King studied that the effect of transplantation of nuclei taken from different stages of growth. तो first stage थी transplantation of cleavage and blastula cell nuclei. Nuclei taken from cleavage cell as well as those from blastula cells were transplanted to enucleated egg of Rana pipens. ये हो गया. न्यूक्लिया लिया हमने क्लीवेज सेल से और ब्लास्टुला सेल, फ्रॉम ब्लास्टुला सेल्स ये ट्रांसप्लांट हो गया enucleated एग में राना पाइपेंस के, ठीक है. About 80% of eggs show segmentation but all eggs which start cleaving do not develop normally. ये लिखा इन्होंने
कि 80% जो है वो सेगमेंटेशन शो करते हैं, पर सारे डेवलप नहीं होते नॉर्मली, क्योंकि आउट ऑफ 204 116 showed normal cleavage. Out of this only 69 produced complete embryos. सिर्फ 69 ने complete embryos प्रोड्यूस किए। इसका मतलब है कि सक्सेस रेट जो वो था 34% था। सक्सेस रेट वॉज 34%। इन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, फर्दर हमने जब किया, it was noticed that nuclei of the cells of earlier stages of development showed better success rate than those from later stages of development. ये लिख देंगे। ये इफेक्ट हमें पता चला कि जो अर्लियर स्टेज में हमने न्यूक्लियाई थे, सेल्स, न्यूक्लियर सेल्स थे, न्यूक्लियाई सेल्स थे न्यूक्लियाई के, उन्होंने ज़्यादा रिजल्ट शो किया, ना कि लेट वालों ने, लेटर स्टेजेस वालों ने। फिर आ गया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ गैस्ट्रुला सेल न्यूक्लियाई। ये फ्रॉम ब्लास्टोसील रूफ ऑफ अर्ली गैस्ट्रुला प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट एम्ब्रियो। ये हो गया इसमें। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जब हमने न्यूक्लियर लिया फ्रॉम द ब्लास्टोसील रूफ of the early gastrula, they produce all type of differentiation necessary for formation of a complete embryo. However, the success rate was low. Out of total of 135 eggs injected, 52 showed normal cleavage and only 0 became complete embryos, thereby giving success rate of only 15%. According to Briggs and King, there is a decreasing success in nuclear transplantation with increasing age of donor embryo. This is another effect of transplantation. Another interesting result obtained by King and Briggs in 1955 is very revealing. They made a comparison of transplant of nuclei from the ectoderm cell of gastrula and endoderm cell of gastrula and obtained result. इसमें क्या हुआ 1955 में कि ट्रांसप्लांट किया of ectoderm cell nuclei. The nuclei from ectoderm cell of late gastrula were transplanted into enucleated cell. ठीक है, न्यूक्लिया लेके एक्टोडर्म सेल का लेट गैस्ट्रुला वाली स्टेज में ये ट्रांसप्लांट किया हमने ई न्यूक्लिएटेड एग्स में। इट वाज फाउंड दैट 41% ऑफ द एग्स showed normal cleavage and formed blastula. On these blastulae, 80% developed into normal tadpoles. ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड में क्या होगा, ट्रांसप्लांट ऑफ एंडोडर्म सेल न्यूक्लियाई। पहले हमने एक्टोडर्म सेल न्यूक्लिया में किया जिसमें 80% डेवलप हो गए नॉर्मल टैडपोल्स में। ठीक है, अब आएगा एंडोडर्म का। इसमें सिमिलर ट्रांसप्लांट किया विद द एंडोडर्म सेल न्यूक्लियाई ऑफ द लेट गैस्ट्रुला। About 40% eggs showed normal cleavage and formed blastulae. Of these blastulae, only 20% developed into normal tadpoles, while 30% were blocked at the gastrula stage and 50% formed embryos with ectodermal deficiency, reduced sense organs and small nervous system and became inviable. इसका ये मतलब हुआ कि ब्लास्टुला जो थे 40% ने नॉर्मल क्लीवेज बनाया और ब्लास्टुला बनाया जब हमने एंडोडर्म सेल न्यूक्लिया में ट्रांसप्लांट किया। फिर उसके बाद 20% डेवलप हो गए नॉर्मल टैडपोल्स में, पर जो 30% थे वो ब्लॉक हो गए गैस्ट्रुला स्टेज में एंड 50% जो थे बने भी एम्ब्रियोज, उनमें एक्टोडर्मल डेफिशिएंसी थी, reduced sense organs थे and small nervous system थे and became inviable. These experiments show that the endoderm nuclei have already undergone some genetic restriction when compared to the ectoderm nuclei. ठीक है, ये हो गया।
अब करेंगे सीरियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला न्यूक्लियाई। इसमें क्या है, सीरियल ट्रांसप्लांटेशन में एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड सक्सेसफुली टू गिव कंटिन्यूटी so that cumulative effect can be studied for generation। सीरियल ट्रांसप्लांटेशन हम इसलिए करते हैं, इसमें nucleus from the micromere of the blastula is transplanted to the enucleated egg। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है from the micromere of the blastula, it is transplanted to the enucleated egg which is activated to parthenogenetic development। When this egg reaches the blastula stage, nuclei from the micromeres are taken and transplanted to a series of enucleated eggs. The eggs develop into tadpoles. This is called first blastula generation. So, if from one of the blastulae the nuclei of the micromeres are again removed and transplanted to a series of enucleated eggs, the eggs show development leading to tadpole stage. This is the second blastula generation and gets an idea of effect of development on nucleus and the changes it may undergo during development। फिर उसके बाद experiments with blastula nuclei clearly prove their totipotency। फिर अब करेंगे ब्लास्टुला न्यूक्लियाई में करा, अब सीरियल ट्रांसप्लांटेशन गैस्ट्रुला न्यूक्लियाई में। इसमें क्या होता है, जब एंडोडर्म न्यूक्लियाई आर टेकन फ्रॉम लेट गैस्ट्रुला एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू अ सीरीज ऑफ इन्यूक्लिएटेड एग्स। अब एंडोडर्म न्यूक्लियाई लिए हमने लेट गैस्ट्रुला स्टेज से और ट्रांसप्लांट किए to a series of enucleated eggs. The nuclei thus taken from adjacent cells produce different varieties। जो nuclei लिए थे हमने, उन्होंने different varieties produce करी of development like blocked blastulae, irregular blastulae, irregular gastrulae, abnormal embryos and one or two tadpoles। If the nuclei from one of the arrested blastulae are transferred to a series of enucleated eggs, they show uniform development in second blastula generation। अब ये न्यूक्लियाई अगर हमने arrested blastulae से ट्रांसफर करें to a series of enucleated eggs, they show uniform development in second blastula generation। Here the variation is less and no one develops into tadpoles। This test clearly reveals that a certain amount of differentiation takes place in the nuclei at the late gastrula stage। The generation of cells produced from blocked blastula nucleus that was transplanted is called clone, as all of them were derived from single endoderm nucleus। ठीक है, this test clearly reveals that a certain amount of differentiation takes place in the nucleation of cell produced from the blocked blastula nucleus that was transplanted is called clone, and all of them were derived from single endoderm nucleus। ये हो गया। अब करेंगे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम सेल्स ऑफ पोस्ट गैस्ट्रुलर स्टेजेस। पहले ब्रिग्स एंड किंग था, फिर 1967 में क्या हुआ, डाइबेरार्डिनो एंड किंग 1967 में they transplanted the nuclei from neural plate of the frog embryo to enucleated eggs and these developed into normal tadpoles। पहले 1953 था, अब 1967 है, जो पहले ब्रिग्स एंड किंग ने किया था। इसके बाद क्या हो गया, another interesting observation was made by King and Dardino when they transplanted the nuclei taken from
carcinoma cells of frog and obtained almost normal embryos. फिर गुरडॉन 1968 में Gurdon transplanted nuclei taken from the alimentary tract of the tadpole of Xenopus laevis to enucleated egg and obtained normal embryos. Okay. So this is a diagram about serial transplantation of nuclei from arrested blastula micromers into the enucleated egg. At each generation, the development is arrested at late blastula stage. So, in comparison of the studies made of Rana pipiens and Xenopus laevis show an interesting contrast. In Rana, the differentiation start at an early stage and nucleus loses its totipotency soon. While in Xenopus, it appears to be taking place very late and nuclei retain their totipotency for a long time. तो Xenopus में क्या है कि जो टोटिपोटेंसी जल्दी राना में डिफरेंशिएशन जल्दी राना पाइपेंस में जल्दी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है अर्ली स्टेज में, जिसके कारण न्यूक्लियस की जो टोटिपोटेंसी है वो जल्दी खत्म होने शुरू हो जाती है. पर Xenopus laevis में ऐसा नहीं है. इट अपीयर्स टू बी टेकिंग प्लेस वेरी लेट एंड द न्यूक्लियर रिटेन देयर टोटिपोटेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, ये हमारा डायग्राम है. सो this is the tadpole, this is the intestinal cell. फिर intestinal cell is insert nucleus into the recipient egg. This is the unfertilized egg. Unfertilized egg is inactivated nucleus with ultraviolet radiation. यहाँ पे ये लिखा है. फिर इसके बाद क्या हुआ, serial transfer of blastula nuclei into other eggs. ये रिपीट भी कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस रिपीट करके फिर उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला. सम अबनॉर्मल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे और बाद में क्या हो, इस साइड में सम नॉर्मल टैडपोल्स डेवलप हो जाएंगे इस साइड में. ये हो गया जो मैंने बोला कि Xenopus laevis और राना पाइपेंस में क्या डिफरेंशिएशन है, कि इसमें डिफरेंशिएशन अर्ली स्टार्ट हो जाएगी और इसमें लीविस में थोड़ी लेट होगी, जिसके कारण इसकी टोटिपोटेंसी है वो जल्दी लूज नहीं होगी. फिर न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट अगर हम स्पीशीज के बिटवीन करें, ये किन्होंने किया, ये हेनन एंड सैली ने किया 1965 में. they tried a nuclear transplant between two species of frog, between Rana pipiens and Rana palustris, Palustris, Rana pipiens and Rana Palustris, and it was successful. The nucleus of Rana palustris, if transplanted into enucleated egg of Rana pipiens, develops into normal adult. It develops into normal adult, showing character of both parents. These are the parents. On the other hand, the nucleus of Rana pipiens, when transplanted into enucleated egg of Rana palustris, development stop at early larval stage. So this is a bit different. First, we took the nucleus of Rana palustris, transplanted into enucleated egg of Rana pipiens. So Rana pipiens का ये जो है enucleated egg है इन येलो कलर. सो इसमें हमने palustris डाला. ठीक है, अब जब palustris की बारी आई and when we added this Rana pipiens, so no, the larval stage is stopped. This is the result. Now the nuclear transplantation in insect was done by Illam Messi, ILLMESEE, in 1955. The late and they made nuclear transplantation in Drosophila. So he transplanted nuclei from late cleavage stage into enucleated egg. इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांट किया न्यूक्लियाई फ्रॉम द लेट क्लीवेज स्टेट इनटू enucleated egg. इसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट प्रोसीडेड नॉर्मली एंड लार्वे हैच्ड आउट इन ड्रोसोफिला. सो इंसेक्ट में ड्रोसोफिला होगा, इसमें लेट क्लीवेज स्टेज आएगी
न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट किसको करेंगे? फ्रॉम द लेट क्लीवेज स्टेट इनटू इन्यूक्लिएटेड एग एंड नॉर्मल लार्वे हैच्ड आउट। अब न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन इन अमीबा, उसमें क्या हुआ? डैनियल ये 1955 में they made some very interesting experiments between two species of amoeba. So Daniel Lee in 1955 they made some very interesting transplantation experiments between two species of amoeba. Amoeba proteus differs from amoeba discoid in three important characteristics. So it was shape, nuclear diameter and division rate. So nucleus taken from Proteus was transplanted into cytoplasm of discoids, resulting in hybrid of Proteus nucleus and discoid cytoplasm (PCDC). This hybrid had a shape intermediate between Proteus and discoid, while in nuclear diameter and the division rate it resembled more like discoid. So this is amoeba proteus, this is the discoid. So the shape, the nuclear diameter is discoid. Hybrid had shape intermediate. The shape is intermediate between discoid and proteus, while the nuclear diameter and division rate ज़्यादा जो था वो discoid के जैसा था. Division D for division, D for discoid. So after now from proteus nucleus, the nucleus of proteus undergone many divisions and a reverse transplant was done. So reverse transplant हुआ उनके बीच में, the hybrid से वो transplant हमने back दोबारा से वापस दे दिया enucleated proteus को. फिर क्या हुआ? The amoeba that is formed as a result of transplant shows division rate characteristics of discoid and not of the proteus. It is possible that the nucleus has acquired some of the characteristics of discoid due to its continued stay for many generations in the discoid cytoplasm. So what happened actually is after the hybrid, जब hybrid बन गया, the proteus nucleus अब बहुत सारी divisions में हुआ, फिर उसका हमने reverse transplant किया. जो nucleus था हाइब्रिड फॉर्म में वो दोबारा ट्रांसप्लांट कर दिया हमने इन्यूक्लिएटेड प्रोटियस में. जब वो डिस्कॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कॉइड की डिवीजन शो कर रहा था, हमने उसको दोबारा प्रोटियस में डाल दिया. उससे पर फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा. उसने क्या किया? द अमीबा दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांट शो डिवीजन रेट, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कॉइड का ही शो किया एंड नॉट ऑफ द प्रोटियस. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लिए थे डिस्कॉइड के, क्योंकि वो बहुत जनरेशन से डिस्कॉइड की साइटोप्लाज्म में रहा. ये हो गया. अब एसिटाबुलेरिया में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, हाउ इट हैपेंस, द न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन इन एसिटाबुलेरिया. So marine alga, Acitabularia is a marine alga. It is formed of single cell and is differentiated into rhizoid, stalk and cap. Early experiment of Acitabularia mostly by Hammerling, and it shows that its stalk can regenerate the amputated cap even when the rhizoidal part containing nucleus is not amputated. हैमरलिंग ने क्या बताया हमें कि इनका जो स्टॉक है वो रीजनरेट हो जाता है, एम्पुटेटेड कैप बना देता है इवन व्हेन, जब राइजोडियल पार्ट जो न्यूक्लियस कंटेनिंग है एम्पुटेट हो गया हो, तब भी वो स्टॉक जो है एम्पुटेटेड कैप रीजनरेट कर सकता है. व्हेन अ नॉन न्यूक्लिएटेड पीस ऑफ एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, नॉन न्यूक्लिएटेड पीस लिया हमने एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, मेडिटेरियन रीजन में होगा इसलिए उसका नाम ऐसा है. इसका स्टॉक विदाउट कैप एंड राइजोइड ये ग्राफ्ट किया ऑन द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोड ऑफ एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा. इसका स्टॉक हमने ग्राफ किया. अब क्या हुआ? फर्स्ट कैप जो था वो डेवलप हो गया सिमिलर टू एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, showing characteristic species represented by stalk.
पर जो सेकंड जनरेशन का कैप था वो इंटरमीडिएट था। सो अगर हम इस कैप को भी रिमूव कर दें, सक्सेसिव कैप्स रिजेंबल ग्रेन्युलेटा। सो अगर इसको रिमूव कर दें हमने जो इंटरमीडिएट स्टेज में था, तो ज़्यादातर सक्सेसिव कैप्स जो थे वो एसिटाब्युलरिया ग्रेन्युलेटा के थे। द न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट। द अबव एक्सपेरिमेंट, इनसे हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सम सब्सटेंस विच मूव्स थ्रू द स्टॉक। ठीक है, वो स्टॉक की तरफ चला जाता है थोड़ा उसका सब्सटेंस। प्रोड्यूसेस कैप अकॉर्डिंग टू जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस when one rhizoid हो गया। इसके बाद जब one rhizoid each of Acetabularia mediterranea and Acetabularia crenulata were grafted, the resulting plant had a cap intermediate between both. So another experiment where two rhizoids of A mediterranea were grafted to one rhizoid of A crenulate, and the hybrid plant produced cap which resembled more that of Acetabularia mediterranea। भले ही हम इनके दो राइजॉइड लगाए, grafted two rhizoids grafted to one rhizoid of A crenulate, इसके बाद A mediterranea ही ज़्यादा हाइब्रिड रिजेंबल उसको करा उन्होंने। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट टू राइजॉइड अब हमने लिए, अब वन राइजॉइड मेडिटेरेनिया का लिया, टू हमने ग्रेनुलाटा का लिया एंड वन मेडिटेरेनिया का लिया। उसमें क्या हुआ, हाइब्रिड ने कैप प्रोड्यूस किया वो वाला जो रिजेंबल करता था ग्रेनुलाटा का। इट इज़ क्लियर कि जो शेप एंड साइज है जो कैप का वो न्यूक्लियस प्रेजेंट पे ही डिपेंड करता है। For PDF form of the notes, you can click down in the description box. Thank you.